Hello everyone, I hope you are all doing well. Today we are going to learn about ethical considerations in civil engineering. This lecture is prepared by Nimal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. Civil engineers play a vital role in shaping our world, and their work must be guided by strong ethical principles. सिविल इंजीनियर्स जो हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वर्ल्ड को शेप करने में, इसलिए इनका जो भी वर्क होगा वो एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. This presentation explores key ethical considerations within the field, encompassing a range of scenarios and challenges. अब इस presentations में आपको बहुत सारे जो हैं ethical considerations के पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत सारे सिनेरियोज को और चैलेंजेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे. Conflicts of interest in project bidding. Transparency. Engineers must disclose any potential conflicts of interest when bidding on projects. This ensures fairness and prevent favoritism. अब इंजीनियर्स को चाहिए कि जब भी वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करते हैं व्हेन दे आर टेकन अ प्रोजेक्ट, तो सारी बातें जो हैं वो उनको बताएं. जो सामने वाली पार्टी है, जितने भी रिलेटेड कंसर्न्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सब कुछ उनको इन्फॉर्म करें. इसकी वजह से जो सामने वाली पार्टी है, जो भी आपका क्लाइंट है, उसको ये पता चलेगा कि आप अपने काम से कितना फेयर हो, और इसी से आपकी जो फेवरेटिज्म है वो भी प्रिवेंट हो जाएगी. Then we have objectivity. Decisions should be based solely on the merits of the project, not personal gains. अब decisions आप जितने भी लोगे related to the project होने चाहिए, इसमें आपका कोई भी personal gain नहीं होना चाहिए. Engineers must remain impartial and prioritize the best interest of the client and the public. इंजीनियर्स को चाहिए कि वो इम्पार्शियल रहें और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करें कि जो उनके क्लाइंट का इंटरेस्ट है और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है. Consequences. Failing to disclose conflicts of interest can result in serious consequences, including loss of license, fines and reputational damage. जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं करोगे और इसके बारे में क्लाइंट्स को, सेकंड पार्टी को जो है, सामने वाली पार्टी को जो है बाद में पता चलेगा, तो उसकी वजह से आपको एज एन इंजीनियर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, यानी कि कुछ रिजल्ट्स को फेस करना पड़ेगा. दैट इंक्लूड्स लॉस ऑफ लाइसेंस, कि आपको जो लाइसेंस मिला हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको हैवी फाइन्स पे करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपकी जितनी भी रेपुटेशन एक इन्वायरमेंट में, एक सोसाइटी में बनी है, वो सारी डैमेज हो जाएगी. Ensuring public safety in infrastructure design. अब आपका जितना भी हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि अब यही बताया गया है कि जितने भी आप डिज़ाइंस बनाओगे, जितने भी आप स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करोगे, उनको ऐसा डिज़ाइन करना है कि पब्लिक सेफ्टी को जो है प्रायोरिटाइज किया जाए. नंबर 1 इज़ लाइफ सेफ्टी. Engineers have a responsibility to prioritize the safety of the public. जैसे कि हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि इंजीनियर्स का सबसे पहला रोल क्या है, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो पब्लिक की हेल्थ को या पब्लिक की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करें. Ensuring that infrastructure is designed and constructed to withstand potential hazards. आप ये उनको इंश्योर कर सकते हो कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आपने डिज़ाइन बनाया है, कोई भी पोटेंशियल हैज़र्ड होता है ये उससे महफूज है. Number 2, building codes. Adherence to building codes and regulations is crucial to ensure the safety and integrity of structures. जब भी आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, डिज़ाइंस बना रहे हो, तो उसमें आपने जो है ऑनेस्टी शो करनी है, सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, और जितने भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट हैं रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट, आपने उन सबको जो है अपने माइंड में रखना है. Number 3, quality control. Rigorous quality control measures throughout the design and construction process are essential
for preventing failures and ensuring public safety. अब आप जितना भी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करोगे उससे ये होगा कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो डिज़ाइन है या आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो स्टे करेगी, और इसी की वजह से पब्लिक सेफ्टी भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो फेलियर्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे. Number 4, maintenance. Regular inspection and maintenance of infrastructure are vital for identifying and addressing potential safety concerns over time. जब वो बिल्डिंग बनाई जा रही है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही है, तब आपने उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है कि कोई भी ख़राब मटेरियल ना यूज़ किया जाए. जो मटेरियल स्टार्ट में यूज़ किया जा रहा था, जो कि क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल था, वही जो है थ्रू आउट द इंफ्रास्ट्रक्चर या थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन जो है वही यूज़ किया जाए. और अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई होते हैं तो एथिकल डिसीजन मेकिंग के थ्रू उनको सॉल्व कर लिया जाए. Balancing environmental impact and development needs. Number 1, sustainable design. Engineers must consider the environmental impact of their projects, using sustainable material, minimizing waste, and promote energy efficiency. अब आपके जो डिज़ाइंस हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि सस्टेनेबल हों, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ वो रहें. उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप जो है सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करो, यानी कि जो लंबे अरसे तक मटेरियल यूज़ हो सकता है या जो अच्छा मटेरियल है, क्वालिटी वाला मटेरियल है, वो यूज़ करें. जितना ज़्यादा हो सके वेस्ट को मिनिमाइज़ करें और प्रमोट करें एनर्जी एफिशिएंसी को. Number 2, mitigation measures. When development impacts the environment, engineers must identify and implement mitigation measures to minimize negative consequences. जब भी आपको ये आइडिया हो कि आपके काम की वजह से जो है एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुंच रहा है, तो आपने उसी वक्त कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिसके थ्रू आप मिटिगेशन को मिनिमाइज़ कर सकें या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को, नेगेटिव रिजल्ट्स को जो है वो मिनिमाइज़ कर सकें. Number 3, community engagement. Involving the community in the planning process can help identify and address environmental concerns and foster a sense of ownership. जब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे अपने प्लानिंग प्रोसेस में तो उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप आइडेंटिफाई कर सकोगे उन प्रॉब्लम्स को, उन एनवायरमेंटल कंसर्न्स को जो लोगों को आइडिया है और आपको आइडिया नहीं है. इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जितना भी काम है, आपकी अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो बहुत ही अच्छे से होगी विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. Ethical responsibilities in construction site management. Safety first. Site managers must ensure the safety of workers by implementing strict safety protocols and providing appropriate training. एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जब कंस्ट्रक्शन साइट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेफ्टी फर्स्ट. जो भी वहाँ पे मैनेजर काम कर रहा है उसको ये चाहिए कि सबसे पहले जो उसके वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को प्रमोट करे, उनको बताए कि स्ट्रिक्टली सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें ताकि कोई भी अगर डैमेज होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो उनको मिनिमाइज़ कर सकें या प्रिवेंट कर सकें. फेयर लेबर प्रैक्टिसेस. Employees should be treated fairly with appropriate wages, working conditions and opportunities for advancement. अब लेबर्स को जो है एक फेयर प्रैक्टिसेस मिलनी चाहिए, उनको जो है इक्वली ट्रीट करना है, फेयरली ट्रीट करना है, उनको अप्रोप्रिएट वेजेस यानी कि अप्रोप्रिएट सैलरीज प्रोवाइड करनी है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए और इन फ्यूचर उनको अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट भी मिलनी चाहिए. Environmental responsibility. Construction sites must be managed responsibility to minimize pollution, conserve resources and protect the environment. जब आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हो तो एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होती है. तो कंस्ट्रक्शन साइट्स ने क्या करना होता है कि वो पोल्यूशन को जितना हो सके उसको मिनिमाइज करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
اور جتنا ہو سکے ریسورسز کو کنزرو کریں یعنی کہ ان کو سیو کریں اور انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں۔ اوپن کمیونیکیشن Open and transparent communication with workers, clients, and regulatory agencies is essential for building trust and resolving issues. جب آپ اوپن کمیونیکیشن رکھو گے، ٹرانسپیرنٹ کمیونیکیشن رکھو گے اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ، ایجنسیز کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو، تو اس کی وجہ سے ٹرسٹ بلڈ ہوگا اور آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں یا ورکرز کے کلائنٹس کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ساتھ ساتھ ریزالو ہوتے رہیں گے۔ Whistleblowing and reporting unethical practices. Code of conduct. Engineers have a duty to report unethical practices that violate professional code of conduct and threaten public safety or the environment. Already ڈسکس کر چکے ہیں ہم اس کو کہ انجینئرز کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی ایتھیکل پریکٹسز ہو رہی ہیں ان کے اپنے ورک انوائرمنٹ میں، اپنے کلیگز میں، اپنے فرینڈس میں، تو اس کو فوراً سے رپورٹ کریں ٹو دا ہائر اتھارٹیز۔ Protection. Whistleblowers should be protected from retaliation and have access to safe and effective channels for reporting concerns. جتنے بھی whistle blowers ہیں وہ بغیر کسی ریٹالیشن کے ان کے پاس ایکسیس ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے بارے میں کمپلین کر سکیں۔ اگر کوئی ان کا کلیگ ہے یا ان کا کوئی انوائرمنٹ میں ایسا انڈیویژول ہے جو کہ ایتھیکل کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کر رہا ہے تو وہ اکارڈنگلی ان کو ہائر اتھارٹیز کو کمپلین کر سکے۔ Consequences. Unreported unethical practices can lead to serious consequences, including project failures, public harm, and erosion to public trust in the profession. اب consequences کیا ہوں گے جب آپ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو نہیں کریں گے یا کوئی بھی unethical practice کو جو ہے وہ اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتائیں گے؟ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سیریس consequences یعنی کہ سیریس ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، جیسے کہ پروجیکٹ فیلئر ہو سکتا ہے، آپ نے جو کنسٹرکشن کی ہے وہ ساری خراب ہو سکتی ہے، پبلک ہارم، لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو آپ کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ خراب ہو جائے گی۔ Ethical dilemmas in resource allocation and budgeting. Resource scarcity. Prioritize projects that provide the greatest public benefit while adhering to ethical principles. آپ نے وہ پروجیکٹس چوز کرنے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو یعنی کہ پبلک کو جو ہے بینیفٹ پہنچے گا، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ اپنی ایتھیکل پرنسپلس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ Cost overruns. Transparency and accountability are crucial when dealing with cost overruns, ensuring that decisions are made in the best interest of the project and the public. آپ نے ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے، اکاؤنٹیبل رہنا ہے جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس ہیں ان میں، جتنے بھی آپ ڈیسیجنز لوگے، ایتھیکل ڈیسیجنز لوگے، وہ سارے ریلیٹڈ ٹو پروجیکٹ ہونے چاہیے اور پبلک سیفٹی کو وہ پروموٹ کریں۔ بجٹ کنسٹرینٹس. Engineers must find creative solutions to achieve project goals within budget constraints while maintaining ethical standards and quality. انجینئرس کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہ ایک بجٹ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے جتنے بھی ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں اور کوالٹی جو ہے اس کو بھی مینٹین کریں۔ Upholding professional standards and codes of conduct. Number 1. Professional development. Continuing education and professional development are crucial for staying abreast of ethical guidelines and best practices. ایک انجینئر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہے نالج سے، کنٹینیو رکھے اپنی ایجوکیشن کو، تاکہ اگر کوئی نیو چینجز آتی ہیں، گائیڈ لائنس میں چینجز آتی ہیں یا کوئی بھی نیو ایڈوانسمنٹس آتی ہیں تو ان کو آئیڈیا ہو۔ Number 2. Mentorship. Mentorship programs can help young engineers understand ethical principles and navigate complex situations. اب mentorship programs جو ہیں وہ ینگ انجینئرس کو، جنہوں نے ابھی پاس آؤٹ کیا ہوتا ہے، جن کا بیچلرس کمپلیٹ ہوا ہوتا ہے یا ابھی نیولی جو ہے وہ فیلڈ میں انٹروڈیوس ہوئے ہوتے ہیں ایز این انجینئر، تو ان کے لیے ضروری ہے
تاکہ وہ ایتھیکل پرنسپلس کو سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور کمپلیکس سچویشنس کو کیسے ریزولو کرنا ہے اور ان کے اوپر کیسے ورک کرنا ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ نمبر 3، پروفیشنل آرگنائزیشنز۔ Memberships in professional organizations provide access to ethical resources, networking opportunities, and support۔ اب اگر آپ پروفیشنل آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ کو ایکسیس ملے گا ایتھیکل ریسورسز کا، نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ کمپنی جو ہے یا وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ سپورٹ کرے گی۔ Ethical implications of new technologies in civil engineering. Data privacy. The use of data-driven technologies raises concern about privacy and security۔ جیسے جیسے ہمارے پاس نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اسی طرح سے ہمارے لیے پریویسی اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ Automation and employment. The increasing automation of construction tasks raises concerns about job displacement and the need for ethical considerations regarding workforce transitions۔ جیسے کہ آپ آج کل دیکھتے ہو، سنتے آ رہے ہو کہ اے آئی جو ہے وہ ہیومنس کو ریپلیس کر رہا ہے، تو سملرلی ان سول انجینئرنگ کے کیس میں جو ہمارے پاس نیو مشینری آ رہی ہے، جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، وہ بھی ہیومنس کو ریپلیس کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جاب ڈسپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جاب لیس ہو سکتے ہیں، ان امپلائڈ ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک ایتھیکل کنسیڈریشن ہے۔ Conclusion and key takeaways. Ethical considerations are paramount in civil engineering۔ Ethical considerations جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں سول انجینئرنگ کے پروفیشن میں۔ By adhering to professional standards and upholding ethical principles, engineers can ensure that their work benefits society, protects the environment, and earns the public trust۔ اگر آپ اپنے پروفیشنل سٹینڈرڈس کے ساتھ سٹک رہو گے تو آپ یہ لوگوں کو شو کر سکتے ہو کہ آپ کتنا ایتھیکلی کام کر رہے ہو، آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو ورک ہے وہ سوسائٹی کے لیے کتنا بینیفٹ ہے۔ سملرلی آپ کا جو کام ہے وہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اسی طرح سے آپ پبلک ٹرسٹ کو ارن کر سکتے ہو، گین کر سکتے ہو۔ This was the end of your lecture. Take care.